फिर आप सभी को स्वागत कर रहे हैं www.mw.life.ca पर। आज जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस वीकेंड पर कई लोगों ने मुझसे इस बारे में बात की और कई लोगों ने कहा कि इस बारे में भी आपको हमें बताना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है रिसर्च कीजिए और लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। मेरे ख्याल से हमारे जो कम्युनिटी है मोस्ट ऑफ अस गो थ्रू दिस डायबिटीज़। नाम कहते बड़ा भयानक है, लेकिन ये एक एक्चुअल फैक्ट है कि हमारे कम्युनिटी इससे गुज़रती है। डायबिटीज़ ये है क्या, इसका कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और किस टाइप्स के डायबिटीज़ होते हैं, इस बारे में लोगों ने इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की, तो आज हम इस प्रोग्राम में यही डिस्कस करेंगे। वैसे कई लोग डायबिटीज़ के नाम सुनते ही बड़े डर जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि अपने हेल्थ को हमें ज़रूर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और हेल्थ को हमें ज़रूर अपने केयर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये क्या है, इसके बारे में क्या केयर करना है, बट एक्चुअली में अपने डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या है इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, और ये कैसे होता है। जो डायबिटीज़ है वो कहते हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिससे आपका जो ब्लड शुगर है वो हाई हो जाता है। योर बॉडी ईदर डजंट मेक इनफ इंसुलिन और कैंट इफेक्टिवली यूज़ द इंसुलिन इट मेक्स। डायबिटीज़ जब जिसको हो जाते हैं, उनके बॉडी यानी उनके जिस्म में से इनफ इंसुलिन नहीं बनता है, और ये जो इंसुलिन ना बनने की वजह जो है वो कई चीज़ें हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। या तो आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बनाते हैं और इसके वजह से ये इश्यू होता है। कहते हैं द हार्मोन इंसुलिन मूव्स शुगर फ्रॉम द ब्लड इनटू योर सेल्स टू बी स्टोर्ड और यूज्ड फॉर एनर्जी। If this malfunctions, you may have diabetes. हार्मोन इंसुलिन जो है मूव्स शुगर, यानी जितने भी शुगर आपके बॉडी में है वो मूव करके ब्लड आपके सेल्स तक पहुंचाते हैं, फिर स्टोर करते हैं, फिर यूज्ड फॉर एनर्जी। अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज़ है। Untreated high blood sugar from diabetes can damage your nerves, eyes, kidneys, and other organs. But educating yourself about diabetes and taking steps to prevent or manage it can help you protect your health. अगर आप अपने हाई ब्लड शुगर को ट्रीट नहीं करोगे, आपको डायबिटीज़ हो जाता है, तो आपके जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाते हैं, आपके आँखें डैमेज हो सकता है, किडनीज़ आपके डैमेज हो सकता है, और आपके जिस्म का और बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो ज़रूर डैमेज हो सकते हैं। अपने आप को इस बीमारी से प्रोटेक्ट करो, और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, देयर आर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। जिससे आपने सुना होगा, जो टाइप 1 है इज़ एन autoimmune disease. The immune system attacks and destroys cells in the pancreas where insulin is made. It's unclear what causes this attack. जरा टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ occurs when your body becomes resistant to insulin and sugar builds up in your blood. It's the most common type. About 90 to 95% of people living with diabetes have type 2. जो type 1.5 है is also known as latent autoimmune diabetes. It occurs during adulthood and sets in gradually like type 2 diabetes. LADA is an autoimmune disease that cannot be treated by diet or lifestyle. Gestational diabetes है is high blood sugar during pregnancy. Insulin blocking hormones produced by the placenta cause this type of diabetes. A rare condition called diabetes insipidus is not related to diabetes mellitus, although it has a similar name.
It is a different condition in which your kidneys remove too much fluid from your body. Each type of diabetes has unique symptoms, causes, and treatments. प्री डायबिटीज़, कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि जी हाँ मैं प्री डायबिटीज़ हूँ. प्री डायबिटीज़ is the term used when your blood sugar is higher than expected, but it's not high enough for a diagnosis of type 2 diabetes. It occurs when the cells in your body don't respond to insulin the way they should. This can lead to type 2 diabetes down the road. जो प्री डायबिटीज़ है वो एक्चुअली आपके जो ब्लड शुगर हायर तो होते हैं, लेकिन इतना नहीं होते हैं कि आपको टाइप 2 का डायग्नोसिस किया जाता है, यानी बॉर्डर पर होते हैं. लेकिन अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, प्रिवेंट नहीं करोगे, तो ये आपको टाइप 2 डायबिटीज़ तक लेकर जाएगा. देन यू विल से आई हैव टाइप 2 डायबिटीज़. और इसके साथ साथ सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज़ के, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं. खैर, इसके सिम्टम्स के बारे में भी बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई एम गोना टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक. ज़रूर साथ देते रहिए, सुनते रहिए www.mwlife.ca. ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ये सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद रियल्टर ही कर सकते हैं. घर बेचण दा मन बनाया या घर खरीदना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, सही ते भरोसेयोग सलाह दे ਲਈ कॉल करो 30 साल दा तजुर्बा रखन वाली रियल्टर कुलजीत कौर ਨੂੰ. SRS Panorama Realty 6047679992 604 767 9992. ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ. ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ. BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ. ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 604-597-1119. ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਖੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ. ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ. ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ. ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ. ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ. ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570. ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ. ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ. ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592. ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592. ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ. ਕਾਲ HTA 604-231-9592. बिरयानी, गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बाबा बीफ कबाब कढ़ाई. ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ. ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती. अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ. ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ. ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰयानी ਖਾਓਗੇ, पाकिस्तान ਦੀ ਬਿਰयानी ਭੁੱਲ जाओगे. हाउस ऑफ चिकन. जय दोस्तों, आप सुन रहे www.mwlife.ca और आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं फैमिली केयर फार्मेसी. फैमिली केयर फार्मेसी अपने भाइयों का अपना फार्मेसी है
जहाँ से आप मेडिसिन, विटामिन, सप्लीमेंट्स, हर्बल मेडिसिन वगैरह ले सकते हो। इनके यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं हफ्ते के 7 दिन। फैमिली केयर फार्मेसी, आप यहाँ से वॉकर, व्हीलचेयर भी ले जा सकते हो। मैक्सिमम कवरेज दिलाते हैं आपके दवाइयों का। 8925 स्कॉट रोड, डेल्टा, 128 स्ट्रीट, 96 एवेन्यू, सरी, या 1539 जॉनसन रोड, वाइट रॉक। ज़्यादा जानकारी के लिए 604-599-0211 या 604-581-1900। फैमिली केयर फार्मेसी। इसके साथ साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर से आप डील कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल या रेगुलेटरी लॉ मैटर से, तो हनीफ लिटिगेशन के शाहिद हनीफ को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। 604-626-3144। आपको अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं अंडर क्रिमिनल कोड, या आप लाइसेंस प्रोफेशनल हो सच एज डॉक्टर, फार्मासिस्ट, इंजीनियर, डील कर रहे डिसिप्लिनरी एक्शंस के, तो आप है या फिर आप विक्टिम ऑफ रेगुलेटरी लॉ है, तो कांटेक्ट करो लॉयर शाहिद हनीफ को। हनीफ लिटिगेशन, 604-626-3144। इसके साथ साथ अगर आपके घर पर या आप कहीं पर इवेंट्स कर रहे हो इस समर में, तो आज ही बुकिंग कराओ, डिस्काउंट्स लो रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड वालों से, जो केटरिंग करते हैं शादी ब्याह, किसी भी फंक्शन, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, पार्क हो, कम्युनिटी में कहीं पर भी कोई भी फंक्शन कर रहे हो, तो अपने सारे खाने पीने का जो बंदोबस्त है केटरिंग के लिए रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड वालों को फ़ोन करो। 604-614-3536 या 604-576-0525। बेस्ट फूड, बेस्ट सर्विस, बेस्ट मैनेजमेंट, वेटर्स यूनिफॉर्म के साथ सर्व करेंगे। इनके मेन्यू बहुत ही बड़ा है, आप हर तरह के मेन्यू यहाँ से ले सकते हो। रीजनेबल रेट देंगे आपको, बस एक बार कॉल करो रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड वालों को। 604-614-3536 या 604-576-0525। इनके यहाँ आप बैठकर भी खाना खा सकते हो, टेक आउट भी करा सकते हो। 17665 66A एवेन्यू, रंगोली केटरिंग एंड स्वीट्स लिमिटेड। और इसके साथ साथ जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है जी डायबिटीज़ पर। अब बहुत लोगों ने बड़े मांग की, आज का ये प्रोग्राम आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम लेकर आ रहे हैं। कहते हैं सिम्टम्स क्या है डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय राइजिंग ब्लड शुगर। जनरल सिम्टम जो है, द सिम्टम्स ऑफ टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 1.5 LADA are the same, but they occur in a shorter period than types 2 and 1.5. In type 2, the onset tends to be slower. Tingling nerves and slow healing sores are more common in type 2. Left untreated, type 1 in particular can lead to diabetes ketoacidosis. This is when there is a dangerous level of ketones in the body. It's less common in other types of diabetes, but still possible. The general symptoms of diabetes include increased hunger, increased thirst, weight loss, frequent urination, blurry vision, extreme fatigue, sores that don't heal. इनमें आदमियों के जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। इन एडिशन टू द जनरल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, मैन विद डायबिटीज़ may have a decreased sex drive, erectile dysfunction, poor muscle strength. और जो औरतों को डायबिटीज़ होते हैं, they can have symptoms such as vaginal dryness, urinary tract infections, yeast infections, dry, itchy skin. जो gestational diabetes है, most people who develop this diabetes don't have any symptoms. Healthcare professionals often detect the condition during a routine blood sugar test or oral glucose tolerance test, which is usually performed between the 24th and 28th weeks of pregnancy. In rare cases, a person with gestational diabetes will also experience increased thirst or urination. The bottom line, diabetes symptoms can be so mild that they are hard to spot at first. Learn which signs should prompt a trip to the doctor.
Discover more about type 2. What to eat, essentials, blood sugar, medications, insulin, metformin. इन सारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. Causes of diabetes. Different causes are associated with each type of diabetes. Type 1 diabetes. Doctors don't know exactly what causes type 1 diabetes. For some reason, the immune system mistakenly attacks and destroys insulin, producing beta cells in the pancreas. Genes may play a role in some people. It's also possible that a virus sets off an immune system attack. ਜਿਹੜਾ type 2 diabetes है. Type 2 diabetes stems from a combination of genetics and lifestyle factors. Having overweight or obesity increases your risk. Carrying extra weight, especially in your belly, makes your cells more resistant to the effects of insulin on your blood sugar. This condition runs in families. Family members share genes that makes them more likely to get type 2 diabetes and to be overweight. Type 1.5 diabetes. Type 1.5 is an autoimmune condition that occurs when the pancreas is attacked by your own antibodies, such as type 1. It may be genetic, but more research is needed. Gestational diabetes. Gestational diabetes occurs the result of hormonal changes during pregnancy. The placenta produces hormones that make a pregnant woman's cell less sensitive to the effects of insulin. This can cause high blood sugar during pregnancy. People who are overweight when they get pregnant or who gain too much weight during pregnancy are more likely to get gestational diabetes. The bottom line, both genes and environmental factors play a role in triggering diabetes. Diabetes risk factors. Certain factors increase your risk for diabetes. Type 1. You are more likely to get type 1 diabetes if you are a child or teenager, you have a parent or sibling with the condition, or you carry certain genes that are linked to the disease. Type 2 diabetes. Your risk for type 2 diabetes increases if you're overweight, are age 45 or older, have a parent or sibling with the condition, aren't physically active, have had gestational diabetes, have prediabetes, have high blood pressure, high cholesterol, or high triglycerides. So type 2 diabetes affects certain racial and ethnic populations. Adults who have African American, Hispanic, or Latino American or Asian American ancestry are more likely to be diagnosed with type 2 diabetes than white adults, according to a research. They are also more likely to experience decreased quality of care and increased barriers to self-management. Type 1.2 diabetes. Type 1.2 diabetes is found in adults over 30 and is often mistaken for type 2. But people with this condition are not necessarily overweight, and oral medications and lifestyle changes have no effect. Gestational diabetes. Your risk for gestational diabetes increase if you're overweight, are over age 25, had gestational diabetes during a past pregnancy, have given birth to a baby weighing more than 9 pounds, have a family history of type 2 diabetes, have polycystic ovary syndrome. Polycystic ovary syndrome. The bottom line is your family history, environment, and pre-existing medical conditions can all affect your odds of developing diabetes. Diabetes complications. इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे after a quick commercial break. ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th Avenue 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007
ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ, 6045990211, 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ, 6045811900, 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 12743 80th ਐਵਨਿਊ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-5553। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਥੈਫਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604-527 4769 6625 A ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 604-503-0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। ਕੱਲ ਸਾਰੇ बड़े खुश सी। होना क्यों नहीं खुश, पेट जो उनके खुश थे बानीज कढ़ाई वाला के डिशेस के साथ। बेस्ट कढ़ाई डिशेस ओनली एट बानीज कढ़ाई वाला। लाहौरी कढ़ाई, अचारी कढ़ाई, कबाब बस कढ़ाई। बस 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 हुण नहीं रह जांदा। बार्नीज कढ़ाई वाला है किथे? अपने सरी पिंड ते 8140 स्ट्रीट, second location 12889 84th Avenue, Surrey. Phone number 7785654416. चिकन, लैम, वेज कढ़ाई, नॉन वेज करी, हर किस्म के एपेटाइजर्स, नान, स्टफ्ड चिकन और लैम नान, बिरयानी, इनके डिशेस का क्या कहना। एक बार ट्राई करोगे बानीज कढ़ाई वाला कभी नहीं भूलोगे। आप खुश, बानीज कढ़ाई वाला खुश। आप सुन रहे दोस्तों www.mwlife.ca और आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं, डायबिटीज़। इसका कोजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और कौन से टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ है, इसके बारे में आज बात हो रही है। डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस। हाई ब्लड शुगर damages organs and tissues throughout your body. The higher your blood sugar is and the longer you live with it, the greater your risk for complications. Complications associated with diabetes include heart disease, heart attack, and stroke, neuropathy, nephropathy, retinopathy, and vision loss, hearing loss, foot damage such as infections and sores that don't heal, skin conditions such as bacterial and fungal infections, depression, and dementia. Gestational diabetes. Unmanaged gestational diabetes can lead to problems that affect both the mother and the baby. Complications affecting the baby can include premature birth, higher than typical weight at birth, increased risk for type 2 diabetes later in life,
low blood sugar, jaundice, and stillbirth. A pregnant person with gestational diabetes can develop complications such as high blood pressure or type 2 diabetes. You may also require cesarean delivery, commonly referred to as C-section. The risk of gestational diabetes in future pregnancies also increase. The bottom line, diabetes can lead to serious medical complications, but you can manage the condition with medications and lifestyle changes. Treatment of diabetes. Doctors treat diabetes with few different medications. Some are taken by mouth while others are available as injections. Type 1 and 1.5 diabetes. Insulin is the main treatment for type 1 and 1.5 diabetes. It replaces the hormone your body isn't able to produce. Various types of insulin are commonly used by people with type 1 and 1.5 diabetes. They differ in how quickly they start to work and how long their effects last. Rapid acting insulin starts to work within 15 minutes and its effects last for 2 to 4 hours. Short acting insulin starts to work within 30 minutes and lasts 3 to 6 hours. Intermediate acting insulin starts to work with 2 to 4 hours and lasts 12 to 18 hours. Long acting insulin starts to work 2 hours after injection and lasts up to 24 hours. Ultra long acting insulin starts to work 6 hours after injection and lasts 36 hours or more. Premixed insulin starts working within 15 to 30 minutes depending on whether a rapid acting or short acting insulin is part of the mix and lasts 10 to 16 hours. Type 2 diabetes. Diet and exercise can help some people manage type 2 diabetes. If lifestyle changes aren't enough to lower your blood sugar, you'll need to take medication. These drugs lower your blood sugar in a variety of ways. Alpha glucosidase inhibitors slow your body's breakdown sugars and starchy foods. Acrobose, Precoz, and Miglitol. Biogonides reduce the amount of glucose your liver makes. Metformin, gluphage, Riomet. DPP-4 inhibitors, improving your blood sugar without making it drop too low. Alogliptin, Nasina. Inagliptin, Trajenta. Onglyza, and Januvia. Glucagon-like peptides stimulates your pancreas to produce more insulin, slow stomach emptying. Maglitins stimulates your pancreas to release more insulin. SGLT2 inhibitors release more glucose into the urine. Sulfonylureas stimulates your pancreas to release more insulin. You may need to take more than one of these medications. Some people with type 2 diabetes also take insulin. Gestational diabetes. If you receive a diagnosis of gestational diabetes, you'll need to monitor your blood sugar level several times per day during pregnancy. If it's high, dietary changes and exercise may be enough to bring it down. Researchers have found that about 15% to 30% of women who develop gestational diabetes will need insulin to lower their blood sugar. Insulin is safe for the developing baby. The treatment regimen your doctor recommends will depend on the type of diabetes you have and its causes. Diabetes and diet. इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है आप तक जो ये प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं डायबिटीज़ व्हाट इट इज़ कॉजेस सिम्टम्स ट्रीटमेंट्स एंड टाइप्स स्पॉन्सर कर रही है पायल चाट हाउस। पायल चाट हाउस जो पहला रेस्टोरेंट है हमारे कम्युनिटी का जो 24 घंटे खुले होते हैं। बेस्ट पराठा सर्व फ्रॉम 4 AM to 11 AM। माउथ वाटरिंग नॉन वेज एंड वेज डिशेस आप यहाँ से ले सकते हैं। बेस्ट गोट मीट ले सकते हो और इसके साथ साथ स्पेशल केटरिंग अप टू 100 पीपल। कॉन्टैक्ट कीजिए हरनेक जी को 604-581
सॉरी 604-518-7444 या पायल चार्ट हाउस को कॉल कीजिए 604-596-1990। पायल चार्ट हाउस जो पायल बिजनेस सेंटर में है। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल। किसी भी तरह के क्रिमिनल चार्जेस लग गए हैं तो क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल को कांटेक्ट कीजिए 604-527-4769। सेक्सुअल असॉल्ट, थेफ्ट, ड्राइविंग ऑफेंसेस कुछ भी हो, बेस्ट रिजल्ट्स आपको दिलाएंगे क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल। इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल केसेस 4 प्रोविंस में जीत चुके हैं, BC, अल्बर्टा, मैनिटोबा एंड ओंटारियो। क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल 604-527-4769 या विजिट कीजिए 6625 152 A स्ट्रीट, सरी। आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप घर बना रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, बेस्ट प्लम्बिंग, हाई एंड ब्रांड नेम्स के प्लम्बिंग सप्लाईज चाहिए तो एक ही नाम याद रखो, HTA। HTA अपने जो प्रोडक्ट्स है हाई एंड ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। इनके शोरूम आज ही विजिट करो, रिचमंड, वैंकूवर, सरी। और बेस्ट प्राइसेस ऑन सर्विसेज के लिए कॉल कीजिए साबी औलक एट 604-728-5339 604-728-5339। और वापस आते हैं अपने प्रोग्राम डायबिटीज़ पर। आज हम बात कर रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि ज़रूर गौर से सुनिएगा इस प्रोग्राम को। टाइप्स 1 एंड 1.5 डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ और उनके डाइट। Healthy eating is a central part of managing diabetes. In some cases, changing your diet may be enough to manage the disease. Your blood sugar levels rises or falls based on the types of foods you eat. Starchy or sugary foods make blood sugar levels rise rapidly. Protein and fat cause more gradual increases. Your medical team may recommend that you limit the amount of carbohydrates you eat each day. You'll also need to balance your carb intake with your insulin doses. Counting carbs help to balance the carb intake with the insulin doses. Type 2 diabetes. Eating the right types of foods can both manage your blood sugar and help you lose any excess weight. Carb counting is an important part of eating for type 2 diabetes. A dietitian can help you figure out how many grams of carbohydrates to eat at each meal. In order to keep your blood sugar level steady, try to eat small meals throughout the day. Emphasize healthy foods such as fruits, vegetables, whole grains, lean proteins such as poultry and fish, healthy fats such as olive oil and nuts. Certain other foods can hurt efforts to manage your blood sugar. Discover the foods you should avoid if you have diabetes. Gestational diabetes. Eating a well-balanced diet is important for both you and your baby during these 9 months. Making the right food choices can also help you avoid diabetes medications. Watch your portion sizes and limit sugary or salty foods. Although you need some sugar to feed your growing baby, you should avoid eating too much. Check out others' do's and don'ts for healthy eating with gestational diabetes. Work with a registered dietitian if you have access to one, then can help you design an individualized diabetes meal plan. Getting the right balance of protein, fat, and carbs can help you manage your blood sugar. Then comes diabetes and exercise. Along with the diet and treatment, exercise plays an essential role in diabetes management. This is true for all types of diabetes. Staying active helps your cells react to insulin more effectively and lower your blood sugar levels. Exercising regularly can also help you reach and maintain a healthy weight, reduce your risk of diabetes-related health complications, boost mood, get better sleep, improve memory. If you have 1 or type 2 diabetes, general guidance is to aim for at least 150 minutes of moderate intensity exercise each week. There are currently no separate exercise guidelines for people who have gestational diabetes, but if you are pregnant, start out slowly and gradually increase your activity level over time to avoid overdoing it. Diabetes friendly exercises include walking,
swimming, dancing, cycling. Talk with your doctor about safe ways to incorporate activity into your diabetes management plan. You may need to follow special precautions like checking your blood sugar before and after working out and making sure to stay hydrated. Consider working with a personal trainer for exercise psychologist who has experience working with people who have diabetes. They can help you develop a personalized workout plan tailored to your needs. Diabetes diagnosis. Anyone who has symptoms of diabetes or is at risk for the condition should be tested. People are routinely tested for gestational diabetes during their second trimester or third trimester of pregnancy. Doctors use these blood tests to diagnose pre-diabetes and diabetes. The fasting plasma glucose (FPG) test measures your blood sugar after you fasted for 8 hours. The A1C test provides a snapshot of your blood sugar levels over the previous 3 months. A 75-gram oral glucose tolerance test is also used. This checks the BG 2 hours after ingesting a sugary drink containing 75 grams of carbs. How to diagnose gestational diabetes? To diagnose gestational diabetes, your doctor will test your blood sugar levels between the 24th week and 28th week of pregnancy. There are 2 types of tests. Glucose challenge test. During a glucose challenge test, your blood sugar is checked an hour after you drink a sugary liquid. If your results are standard, no more testing is done. If blood sugar levels are high, you'll need to undergo a glucose tolerance test. Glucose tolerance test. During the glucose tolerance test, your blood sugar is checked after your fast overnight. Then you're given a sugary drink and your blood sugar is retested after 1 hour and again after 2 hours. Gestational diabetes is diagnosed if any of these 3 readings come back noting high blood sugar. The earlier you diagnosed with diabetes, the sooner you can start treatment. Find out whether you should get tested and get more information on tests your doctor might perform. If you don't already have a primary care specialist, you can browse doctors into your area through the helpline Find Care tool. Now comes the diabetes prevention. Everybody wants to listen to diabetes prevention. And you have to listen to it, because if you want to prevent and you want to be healthy, you want to live long, you need a good prevention tips. Type 1 and type 1.5 diabetes are not preventable because they are caused by an issue with the immune system. Some causes of type 2 diabetes, such as your genes or age, aren't under your control either. Yet many other diabetes risk factors are manageable. Most diabetes prevention strategies involve making simple adjustments to your diet and fitness routine. If you receive the diagnosis of pre-diabetes, few things you can do to delay or prevent type 2 diabetes. Get at least 150 minutes per week of aerobic exercises like walking or cycling. Cut saturated and trans fats along with refined carbohydrates out of your diet. Eat more fruits, vegetables, and whole grains. Eat smaller portions. Try to lose 5% to 7% of your body weight if you have overweight or obesity. These aren't the only ways to prevent diabetes. Discover more strategies that may help you avoid this chronic health condition. Diabetes in pregnancy. People who have never had diabetes can suddenly develop gestational diabetes during pregnancy. Hormones produced by the placenta can make your body more resistant to the effects of insulin. Pre-gestational diabetes. People can have diabetes before they conceive and carry it with them into pregnancy. This is called pre-gestational diabetes. Risk to your newborn. Diabetes during pregnancy can lead to complications for your newborn, such as jaundice or breathing problems. If you're diagnosed with pre-gestational or gestational diabetes, you'll need special monitoring to prevent complications. Does gestational diabetes disappear on its own? Gestational diabetes should go away after you deliver.
but it does significantly increase your risk of getting diabetes later. About half of people with gestational diabetes will go on to develop type 2 diabetes. Diabetes in children. Children can get both type 1 and type 2 diabetes. Managing blood sugar is especially important to young people because diabetes can damage important organs such as the heart and kidneys. Type 1 diabetes. The autoimmune form of diabetes often starts in childhood. One of the main symptoms is increased urination. Kids with type 1 diabetes may start wetting the bed after they've been toilet trained. Extreme thirst, fatigue, and hunger are also signs of the condition. It's important that children with type 1 diabetes get treatment right away. The condition can cause high blood sugar, dehydration, and diabetic ketoacidosis, DKA, which can be medical emergencies. Type 2 diabetes. Type 1 diabetes used to be called juvenile diabetes because type 2 was so rare in children. Now that more children have overweight or obesity, type 2 diabetes is becoming more common in this age group. Some children living with type 2 diabetes don't experience symptoms others may experience. Increased thirst, frequent urination, extreme fatigue, blurry vision. Type 2 diabetes is often diagnosed based on medical history, a physical exam, and blood work. Untreated type 2 diabetes can cause lifelong complications, including heart disease, kidney disease, and blindness. Healthy eating and exercise can help your child manage their blood sugar and prevent these problems. Type 2 diabetes is more prevalent than ever in young people. Learn how to spot the signs so you can report them to your child's doctor. We will be discussing more about diabetes. Stay tuned. सुनते रहिए www.mwlive.ca